ऑलरेडी आम 6टा क्वेश्चन डिस्कस कर सारी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री चैप्टर किसी इंपोर्टेंट डाटा ऑलरेडी आम डिस्कस कर सारी गोटे महत्वपूर्ण पुणी आज 6टा क्वेश्चन डिस्कस करने आगु गोटे इंपोर्टेंट कोड विषय कहवाक चाहूँगी कि सर्टकट कोड जोटा कि समस्ते इजिली किसी टॉपिक्स पर मन रखिपारे आम जिते कि कॉलोनियल इरा विषय डिस्कस करुचे उपनिवेशवाद डिस्कस करुचे जिते भी यूरोपियन कॉलोनियल पावर भारत को आसी गोटे सिक्वेन्स आसी जोटा कि आम जानी फर्स्ट आसते पोर्तुगीज तापर आसी डचेस तापर आसी आमर इंग्लिश फोर्सेस तापर आसते फ्रेंच सब लास्ट समस्ते यहाँ मन रखिपारे न रखिपारे से गोटे छोट कोड जदि आम मन कोड आकार मन रखा तो यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इजी हो कोड टी हूँ पी डी ई एफ कॉलोनियल पावर माने भारत को आसबार सिक्वेन्स PDEM P stands for Portuguese, D stands for Dutch, E stands for English forces, F stands for French. ये समस्ते ताका ईस्ट इंडिया कंपनी गठन करके आसते फर्स्ट आसते पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी गठन करके आसते एंड पोर्तुगल्स वेर द फर्स्ट colonial powers to discover oceanic route to India. First पोर्तुगीज माने ही भारत को जलपथर आविष्कार करथिले अंडर द लीडरशिप ऑफ वास्को दा गामा इन 1498 वास्को दा गामा अंडर द लीडरशिप ऑफ वास्को दा गामा the Portugals discovered oceanic route to India. से माने प्रथमे आसी कोठी लगिथिले कालिकट आ सेते बेले सही जगह रे नेटिव इंडियन रूलर थिले जामोरी तेनो एथरे तीनटा पॉइंट आमे मन रखिबा द फर्स्ट कॉलोनियल पावर और यूरोपियन कॉलोनियल पावर टू डिस्कवर ओशियनिक रूट टू इंडिया वाज पोर्तुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ वास्को दा गामा एंड वास्को दा गामा जोटी फर्स्ट इंडिया रा फर्स्ट उपकूल रे आसी लागिथिले कालिकट रे लगिथिले केबे लगिथिले 1498 रे लगिथिले आ सही जगह रे नेटिव रूलर किए थिले जामोरी इंपोर्टेंट नाटी होची जामोरी ZAMORIN जामोरी PDEF P फॉर पोर्तुगीज D फॉर डचेस E फॉर इंग्लिश फोर्सेस और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी F फॉर फ्रेंच वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो आमर जो फर्स्ट से जीवा करू ये जिनस मन रखा पड़ो फर्स्ट कॉलोनियल पावर भावे पोर्तुगीज मैंने आसते तेज आपको आम जा नंबर 7 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी आम 6टा क्वेश्चन डिस्कस कर सारी एवं 7 नंबर क्वेश्चन को जीवा The battle was fought in between French and British in 1760. This battle is known as A. Battle of Vandivas, B. Battle of Palasi, C. Battle of Tarai, D. None of this. जोटा कि मो पावर स्ट्रगल कॉलोनियल रूल मानकर पावर स्ट्रगल भाव में ऑलरेडी डिस्कस कर सारी आम कि जो भारत रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पावर स्ट्रगल रे माती रही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जैकोबन क्लब कहले गोटे पॉलिटिकल अलायंस गठन कर भारतीय राजा मान गोटे अलायंस गठन करते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेमिति पॉलिटिकल अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हो सब्सिडारी अलायंस हो सेमिति ताकर पॉलिटिकल अलायंस आदि गठन करते फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली युद्ध अवतीर्ण होते विभिन्न पैक्ट होता जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट The battle was fought in between French and British in 1760. बहुत युद्ध होइतिला. The answer will be Battle of Vandivas. Battle of Vandivas. 1760. Option A. Battle of Vandivas. Battle of Vandivas was fought in 1760 between English forces and French forces.
and an important treaty was signed between British East India Company and French East India Company was Treaty of Paris. What an important treaty was signed between British East India Company and French forces was Treaty of Paris. Treaty of Paris जोटा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आउ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भितर साइन होता तापर आम ऑलरेडी देखीचे ऑप्शन बी रे बैटल ऑफ पलासी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट बैटल ऑफ पलासी ऑप्शन बी रे आसुचे हमर बैटल ऑफ पलासी जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू बहुत बहुत इंपोर्टेंट मैं आगुरी ऑलरेडी डिस्कस कर सारी बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट बिटवीन नवाब ऑफ बेंगल सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव एट दैट टाइम ही वाज द हेड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ पलासी जोटा कि 1757 रे हितला बैटल ऑफ वांडीवास जो थे कि गोटे ऑलरेडी जो थे कि ऑलरेडी फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भितर गोटे इंपोर्टेंट ट्रीटी साइन होता है जोटा कि ट्रीटी ऑफ पेरिस कह जाए ट्रीटी ऑफ पेरिस द वेरी इंपोर्टेंट बैटल ऑफ वांडीवास जोटा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भितर होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन तापर ऑप्शन बी रे आमे देखुचे बैटल ऑफ पलासी जोटा कि 1757 रे होइतला ब्रिटिश फोर्सेस आउ नवाब सिराजुद्दौला पर तापर ब्रिटिश फोर्सेस मेड मीर जाफर एज द नवाब ऑफ बेंगल वन टाइप ऑफ दे कॉन्कर्ड बेंगल तापर हमें देखुचे ऑप्शन सी बैटल ऑफ टेराइन इट इज वेरी इंपोर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एनिशिएंट इंडिया विषय आम जो कथा होचे और मेडिवल हिस्ट्री विषय कथा होचे दिस बैटल इज वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज बैटल ऑफ टेराइन there are two battle of terrains were fought between Prithviraj Chauhan, the Rajput forces who was leading the Rajput forces, and the Islamic forces came from Afghanistan or Ghazni Empire. Muhammad Ghori. There were two important battles. Battle of Terain 1 and Battle of Terain 2. दुईटा important Terain battle होइतला. Battle of Terain 1, Battle of Terain 2. बैटल ऑफ टेराइन 1 होइतला 1191 रे 1191 रे टेराइन 2 होइतला 1192 रे तो हमें जदि डिस्कस करबा बैटल ऑफ टेराइन होइतला टेराइन 1 होइतला 1191 अब बैटल ऑफ टेराइन 2 होइतला 1192 इन 1191 पृथ्वीराज चौहान was leading the Rajput forces completely rooted out Muhammad Ghori from India. And after that, Muhammad Ghori returned back in 1192 in second battle of Terain. And on the battleground, he was able to conquer over Prithviraj Chauhan. आज जतबेले आमे पृथ्वीराज चौहान को विषय कथा होचे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आछि पृथ्वीराज चौहान एट दैट टाइम पृथ्वीराज चौहान वाज अ वेरी इंपोर्टेंट कैरेक्टर इन इंडियन हिस्ट्री एंड तांकर बायोग्राफी द बायोग्राफी ऑफ पृथ्वीराज चौहान वाज रिटन इन पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो biography of Prithviraj Chauhan. Biography of Prithviraj Chauhan is called as Prithviraj Raso, and Prithviraj Raso is written by the court poet of Prithviraj Chauhan, Chand Bardai. The question is कि तमने who written the Prithviraj Raso, the biography of Prithviraj Chauhan, Chand Bardai, the court poet of Prithviraj Chauhan, who fought two important battles with Muhammad Ghori. First Battle of Terain 1, second Battle of Terain 2. Number 8 question is also based on some important words. Question is Treaty of Salawai. Treaty of Salawai signed at the war of A. First Anglo-Maratha War. Option B. Second Anglo-Maratha War.
ऑप्शन सी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ऑप्शन डी हल्दी घाटी। अब इंडियन हिस्ट्री रे मराठास were also played a vital role, गोटे बहुत बड़ रोल प्ले करते मराठा माने भारत रो इतिहास रचिबारे। और दे फॉट 3 important wars with Britishers after the fall of Mughal Empire रो पतन पर मराठा माने भारत को गोटे छत्र रे बांधी की रखिबा को उद्यम करते और से माने ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्स विरुद्ध 3टा इंपोर्टेंट वार लड़ते जोटा कि हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत इंपोर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन आछी एंग्लो मराठा वार विषय रे ट्रीटी ऑफ सालावाई साइन एट द वार ऑफ ये जते ऑप्शन अछि से भितर करेक्ट आंसर हबो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ऑप्शन ए फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ट्रीटी ऑफ सालावाई फर्स्ट एंग्लो मराठा वार व्हिच वाज फॉट इन 1775 to 1782, very important। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार फॉट in the year of first Anglo-Maratha war started in the year of 1775 and it lasted till 1782। और सेथरे को important treaty signed इतना between English forces and Marathas, Treaty of Salavai। and in first Anglo-Maratha war British forces were completely defeated by the Maratha forces। चला in first Anglo-Maratha war British forces were completely defeated by the Maratha forces and Treaty of Salavai was signed aftermath of the first Anglo-Maratha war। And if we discuss about the second Anglo-Maratha war which started in 1803 and the war continued till 1806 in which Maratha kingdom was decentralized, भाग भाग हो जाता सेकेंड एंग्लो मराठा वार पर मराठा मान भितर जो एकताटा थिला जो कॉन्फिडेरेसीटी थिला सेकेंड एंग्लो मराठा वार रे सेटा भांगी जायतला। आउ सेठी मध्ये गोटे इंपोर्टेंट ट्रीटी साइन हेतला ब्रिटिश और मराठा मान भितर। फर्स्ट ट्रीटी जो साइन हेतला ट्रीटी ऑफ सालावाई फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। सेकेंड एंग्लो मराठा वार रे मते इंग्लिश फोर्सेस और ब्रिटिश मान इंग्लिश फोर्सेस और मराठा मान भितर गोटे इंपोर्टेंट ट्रीटी हेतला ट्रीटी ऑफ बसीर। ट्रीटी ऑफ बसीर ट्रीटी ऑफ बसीर सेकेंड एंग्लो मराठा वार रे गोटे इंपोर्टेंट ट्रीटी साइन हेतला ब्रिटिश एम्पायर और मराठा मान भितर ट्रीटी ऑफ बसीर। तापर थर्ड एंग्लो मराठा वार जोटा कि मराठा साम्राज्य कंप्लीटली रूटेड आउट बाय इंग्लिश फोर्सेस एंड इंग्लिश फोर्सेस गेन पावर ओवर ऑल द मराठा कॉन्फेडरेशन। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 to 1819 भितर हेतला। एट दैट टाइम द मेन पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर वाज पेशवा बाजीराव II and he signed a pact with English British East India Company, Treaty of Pune was signed between Peshwa Bajirao II and English forces in Third Anglo-Maratha War 1817 to 1809 and Peshwa Bajirao II is the father of Nana Sahib। Peshwa Bajirao II was the father of Nana Sahib who was a main face during Sipahi looting। Peshwa Bajirao II was the father of Nana Sahib who was a main face of Sipahi looting। तापरे हमर ऑप्शन डी आसी हल्दी घाटी वार ऑफ हल्दी घाटी। एटा मध्ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट वार हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू रु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु हल्दी घाटी war was fought in the year of 1576। हल्दी घाटी war was fought in the year of 1576। कहा भितर हेतला? It was fought between two important legends of Indian history, one Maharana Pratap of Mewar and another one Akbar the Great। Jalaluddin Muhammad Akbar was the greatest sultan of Mughal dynasty and Maharana Pratap तांको भितर 1576 रे गोटे युद्ध होइतला
सेटा हल्दीघाटी युद्ध रूपे प्रसिद्ध 1576 and in which Mughal Empire gained a dominant control over the Rajputanas. Rajputana रे Mughal after the battle of Haldighati गोटे बहुत बड़ डोमिनेंस देखेबारे प्रसिद्ध होते ऑलरेडी से माने हल्दीघाटी युद्ध पर राजपूताना को कंप्लीटली दखल कर आगू बढ़ते। नंबर 9 हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू रू जब आम देखा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे। नंबर 9 हु कंपेल्ड आदि ग्रंथ। मेडिवल पीरियड पर जितेबाला आमर भक्ति आंदोलन आरंभ हुए जब आम भक्ति रीजन को फेरी जा भक्ति मूवमेंट टाइम गुरु नानक एस्टाब्लिश डिफरेंट पंथ इज कॉल्ड नानक पंथ एंड नाउ इट इज नोन एज सिखिज्म। नानक पंथ was established by Guru Nanak and Sikhism was established by Guru Nanak Dev. Guru Nanak Dev, from Guru Nanak Dev, the Sikh believes in the concept of 10 gurus. Sikh मानकर जो सिखिज्म कंसेप्ट अच्छी 10 गुरुज से बहुत प्रसिद्ध। फर्स्ट गुरु गुरु नानक, सेकेंड गुरु गुरु अंगद एमती ही 10 गुरु को सिख मैंने विश्वास करते 10 जन गुरु से भितर किसी गुरु का नाम मेंशन है से क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा हु कंपेल्ड आदि ग्रंथ व्हिच इज ए मेन रिलीजियस स्क्रिप्चर इन सिखिज्म। आदि ग्रंथ एंड आदि ग्रंथ वाज कंपेल्ड बाय गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव कंपेल्ड आदि ग्रंथ। द करेक्ट आंसर of who compelled Adi Granth is Guru Arjun Dev. Guru Arjun Dev is the 5th Guru of Sikh religion. Sikh पंथरे 5th Guru होचंती Guru Arjun Dev. There are many important points we can culture from Guru Arjun Dev. Exam point of view. First, Guru Arjun Dev compelled Adi Granth. Second, Guru Arjun Dev completed the construction of अमृतसर एंड हरमंदिर साहेब। हरमंदिर साहेब और अमृतसर रो कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करथिले गुरु अर्जुन देव 5th गुरु ऑफ सिक्स। आउ गुटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर दैट पाकिस्तान रिसेंटली द पाकिस्तान हैज ओपन करतारपुर कॉरिडोर व्हिच इज एन इंपोर्टेंट श्राइन ऑफ सिक्स is established by Guru Arjun Dev. Kartarpur, the town of Kartarpur and Taranpur were established by Guru Arjun Dev, the 5th Guru of Sikhs. जोटा कि करंट एफआईआर दृष्टि भी बहुत इंपोर्टेंट करतारपुर कॉरिडोर जोटा कि पाकिस्तान ने ओपन करी of that Kartarpur was established by Guru Arjun Dev, 5th Sikh Guru. And as we know 5th Sikh Guru Guru Arjun Dev was executed by Jahangir, मुगल एम्परर और मुगल सम्राट जहांगीर को द्वारा गुरु अर्जुन देव पर हत्या करा जायतला। कारण से मुगल एम्पायर विरुद्ध स्वर उत्तोलन करते और मुगल एम्परर जहांगीर कर जे विद्रोही गोटे पुओ थिला खुसरू बोली ताको संगे रिलेशन एस्टाब्लिश करते गुरु अर्जुन देव। मुगल एम्पायर विरुद्ध स्वर उत्तोलन करबार जहांगीर एक्जिक्यूटेड गुरु अर्जुन देव 5th गुरु ऑफ सिक्स। 5th गुरु एटा इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। which number guru who was the 5th guru of Sikhism होचंती गुरु अर्जुन। तापर आमे देखिबा गुरु नानक, he was the first guru of Sikhism and he established Nanak Panth or Sikhism. And the important question related to Nanak Panth is Guru Nanak is the birthplace of Guru Nanak. The birthplace is Guru Nanak is situated at Talwandi. Nowadays it is situated at Lahore, Pakistan. Guru Nanak ka birth place is in Talwandi of Lahore, which is known as Nanakna Sahib, which is known as Nanakna Sahib. And current affair दृष्टि मध्य एटा इंपोर्टेंट कारण एबे रिसेंटली पाकिस्तान रे नानकना साहेब उपरे किछि आक्रमण होइतला से समय नानकना साहेब को भंगा जिला विभिन्न धमक चमक मध्य होइतला और सेटा भारत रे सिख संप्रदाय उपरे गोटे बहुत बड़ आंदोलन सृष्टि होता है। समय बहुत गुड़ा आंदोलन चलता है भितर तो यहाँ करेन्ट एफआईआर दृष्टि बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रिसेंटली नानक ना गुरुद्वारा उपर अटैक होता पाकिस्तान।
तो आउ गोटे इंपोर्टेंट एक्सपेक्ट होची गुरु नानक विषय ही एस्टाब्लिश लंगर सिस्टम जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ सिखिज्म लंगर सिस्टम और इट इज नोन एज कॉमन किचन जो कि सब संप्रदाय लोक आसिक भोजन करें लंगर सिस्टम जो कहते सिख संप्रदाय और सिख संप्रदाय लंगर सिस्टम स्टार्ट करते गुरु नानक जी देखिए लंगर सिस्टम वाज एस्टाब्लिश्ड बाय गुरु नानक देव तापर आम सी रे अच्छे गुरु हरगोविंद राय इज द सिक्स्थ गुरु गुरु हरगोविंद राय इज द सिक्स्थ गुरु ऑफ सिखिज्म after the execution of Guru Arjan Dev Guru Hargobind Rai became the sixth guru of Sikhism and he adopted the title Padshaha. Which Sikh guru adopted the title Padshaha? It is Guru Hargobind Rai. Padshaha. Guru Hargobind Rai adopted the title Padshaha and he was the sixth guru. And he was the first Sikh guru who converted the Sikh community into a military community. Sikh community started from Bhakti movement by Guru Nanak Dev, but literally after the execution of Guru Arjan Dev, Sikhs were completely disappointed with the treatment of Mughal Empire and they organized themselves as a military community under the leadership of Guru Hargobind Rai. Exam question, very important question. Which Sikh guru transferred Sikh community into a military community? It is Guru Hargobind Rai. And he adopted, Guru Hargobind Rai adopted the title Padshaha. P-A-D-S-A-H. Padshaha. Guru Hargobind Rai adopted the title Padshaha and it is Guru Hargobind Rai, the sixth guru of Sikhs, converted the Sikh community into a military community from a religious community. तापर अच्छे हमारे Guru Ramdas. Guru Ramdas was the fourth Sikh guru. Guru Ramdas was the fourth Sikh guru of Sikhism and he started the construction of Amritsar and Harmandir Sahib. The construction of city Amritsar and Harmandir Sahib was started by Guru Ramdas and it was completed by Guru Arjan Dev. And the Golden Temple is also known as Harmandir Sahib. So we have discussed about four Sikh gurus. Guru Nanak, who started Sikhism and he established Langar system. Guru Arjan Dev, he was the fifth Sikh guru and he was executed by Jahangir. City of Kartarpur and Taranpur were established by Guru Arjan Dev. Adi Granth was completed by Guru Arjan Dev. City of Amritsar and Harmandir Sahib was completed by Guru Arjan Dev. Guru Hargobind Rai. Guru Hargobind Rai was the sixth Sikh guru who organized the Sikh community into a military community from a religious community, and it was Guru Ramdas who was the fourth Sikh guru who started the construction of Harmandir Sahib and Amritsar. It is very very important to memorize the contribution of all the Sikh gurus. From the exam point of view. Exam point of view, Sikh Empire बहुत important बहुत तोर क्वेश्चन आसे एबे सेही सिख एम्पायर विषय आहुरी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमें देखि पाउछु एंड ए क्वेश्चन मध्ये बारंबार परीक्षा रे आसे गोटे टर्म खालसा. इट्स अ very very important term in our Indian culture. Question होची who organized a community of warrior called Khalsa. Already we have discussed that it was Sri Guru Hargobind Rai who organized the community into a military community, and they continued their war against Mughal Empire, and it was Guru Gobind Singh started a new system of Khalsa Panth. It was Guru Gobind Singh who started a new Panth Khalsa system in Sikh Empire, in Sikhism.
So who organized community of warrior called Khalsa? It is Guru Gobind Singh. The answer will be Guru Gobind Singh. यदि आम देखा गुरु हरगोविंद राय समय सिख मैंने गोटे मिलिटारी कम्युनिटी भाव होते से मैंने मुगल एम्पायर विरुद्ध युद्ध जारी रखी गुरु तेग बहादुर हु वाज द 9th Guru of Sikhs. Guru Tegh Bahadur, who was the 9th Guru of Sikhs, was executed by Aurangzeb. Some Kashmiri Pandits approached सेतबेले जो कि औरंगजेब समय जितेबाला कि रिलीजियस कन्वर्सन बड़ा धर्मांतरण बहुत जोरसोर रे थिले फोर्सफुली कन्वर्सन बहुत जोरसोर रे थिला औरंगजेब द ब्रूटल फोर्सेस अंडर औरंगजेब वर कन्वर्टिंग many religious people into their own sect. धर्म रे बहुत लोगों को बड़ा धर्मांतरण कर इतिहास रही औरंगजेब का समय एंड मेनी कश्मीरी पंडित्स अप्रोच गुरु तेग बहादुर द 9th Guru of Sikhs and Guru Tegh Bahadur raised voice against Aurangzeb and he was executed by Aurangzeb. Guru Tegh Bahadur, the 9th Guru of Sikhs, Guru Tegh Bahadur was executed by Aurangzeb. And to take the revenge of the execution of Guru Tegh Bahadur, Guru Gobind Singh established Khalsa Panth. The meaning of Khalsa is pure warrior. The meaning of Khalsa is pure warrior. Khalsa means Sudh. The pure warriors were called Khalsa. And from that time, Sikhs were bound to keep Panch Kakar with them always. It is very, very important questions in Indian history. What is Panch Kakar of Sikhs? Panch Ka, K for Kesh, K for Kripan, K for Kara, K for Kanga, K for Kesh. Panch Kakar were the main instrument to be kept by a Khalsa. It was Guru Gobind Singh who established the Khalsa Panth on the day of Baisakhi. On the day of Baisakhi. Now, a बहुत important जिनस Khalsa Panth was organized by Guru Gobind Singh on the day of Baisakhi. And Khalsa means pure warrior. And all the Khalsa is bound to keep Panch Kakar with them. We already know Maharaja Ranjit Singh. First a systematic Sikh empire was established by Maharaja Ranjit Singh. There were no systematic kingdom in Sikh community. They were divided into missals. Only they were fighting with Mughal Empire to protect the native people of India. But Maharaja Ranjit Singh for the first time established a Sikh empire as his capital at Lahore. The capital of Maharaja Ranjit Singh was at Lahore and he signed an important treaty with British East India Company. Treaty of Amritsar in 1809. Treaty of Amritsar 1809. Maharaja Ranjit Singh established a Sikh empire and he signed a treaty of Amritsar with British forces in 1809 and his capital was at Lahore. And already we have discussed Guru Tegh Bahadur 1664 to 1675. He sacrificed his life to escape the Kashmiri Pandits, and the place Seesganj Gurudwara at Chandni Chowk is a symbol of his sacrifice. Seesganj Gurudwara, the place on which Guru Tegh Bahadur was executed. Guru Har Rai, he was the 8th Guru of Sikhs. Guru Har Rai, he was the 8th Guru of Sikhs. Number 11. Very, very important question, exam point of view. The books and authors, जोटा कि बहुत important question से books and authors chapter रू history रे जंते हम देखिबा question आसिता है books and authors, important heritage, important wars और important dynasties. एति की बेसिस रो ही हिस्ट्री रे हमें विभिन्न प्रकार क्वेश्चन पाइबा और सेतरे बुक्स एंड ऑथर्स
plays a vital role. So say ऊपर गोटे क्वेश्चन है, who had first cited the drain of wealth theory in his book Poverty and Un-British Rule in India. Already we have discussed that we have designed our question in such a way that we can culture many questions out of one question. तो एथरे आमे कितने पॉइंट पाइले. First, who had written the book Poverty and Un-British Rule in India. Second point आमे पाइले, the book Poverty of Un-British Rule in India is deals with which sector? First answer is, who had written the book Poverty and Un-British Rule in India? It is Dadabhai Naoroji. Option C. Dadabhai Naoroji written the book Poverty and Un-British Rule in India. Second point, the book Poverty and Un-British Rule in India deals with which chapter? It deals with drain of wealth theory. The theory of wealth draining, that how Britishers were taking wealth of our country to their colonial countries, is cited in Poverty and Un-British Rule in India, written by Dadabhai Naoroji. And Dadabhai Naoroji is also known as Grand Old Man of India and Indian Gladstone. Grand Old Man of India and Indian Gladstone. Another point about Dadabhai Naoroji, he has already written a book, Poverty and Un-British Rule in India, and he established first Gujarati newspaper of India, Rashtragoptar. Rashtragoptar was established by Dadabhai Naoroji, and it is the first Gujarati newspaper of India. Dadabhai Naoroji is known as Indian Gladstone and Grand Old Man of India, and it is the first. Dadabhai Naoroji was the first person. Dadabhai Naoroji was the first Indian to be elected to the House of Commons of England by Liberal Party ticket. Dadabhai Naoroji was the first Bharatiya जे कि ब्रिटिश मानकर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कमन को प्रथम भारतीय भावे इलेक्टेड होते लिबरल पार्टी टिकेट रे. तांको आगुरु कौन भारतीय ब्रिटिश पार्लियामेंट को इलेक्टेड होई नथिले. दादाभाई नरोजी वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू हाउस ऑफ कॉमन्स बाय लिबरल पार्टी टिकेट, ऑन लिबरल पार्टी टिकेट. दादाभाई नरोजी. और दादाभाई नरोजी आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट ताका भितर होची, दादाभाई नरोजी वाज द फर्स्ट पर्सन to start Swaraj concept. The concept of Swaraj was established by Dadabhai Naoroji in 1906 Calcutta session of Indian National Congress. 1906 Calcutta session of INC. Dadabhai Naoroji established the Swaraj concept at Calcutta session of Indian National Congress in 1906. Then let's come to another option. Option A, R.C. Datta. About R.C. Datta, we will discuss a question on number 12. Option B, B.B. Patel, Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar, as we know, that Sardar Vallabhbhai Patel is known as Iron Man of India, or he is known as Indian Bismarck. Sardar Vallabhbhai Patel is known as Indian Bismarck. And he is known as Iron Man of India. And as we all know, his contribution in unification of our princely states and unification of our India or princely state, जेतेबेले कि भारत अनेक गुड़े गणजात राज्य रे विभक्त होइतिला, से सबु को भारत रे मिसेबारे वल्लभ भाई पटेल कर योगदान केते. ऑपरेशन पोलो करके से हैदराबाद को भारत संगे मिसेइतिले, कश्मीर को भारत संगे मिसेबारे ताको योगदान केते आमे समस्त जानिचे. ऑपरेशन पोलो और ऑपरेशन कश्मीर को भारत रे मिले बारे. एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल was the first Home Minister and Deputy Prime Minister of India. कौन?
Vallabhbhai Sardar Vallabhbhai Patel was the first Home Minister and Deputy Prime Minister of India. सरदार वल्लभभाई पटेल को सरदार उपाधि कौटू मिलता है बहुत तोर क्वेश्चन आसे सरदार उपाधि गांधीजी देते और बारदोली सत्याग्रह पर गांधीजी सरदार वल्लभभाई पटेल को गांधीजी सरदार उपाधि देते और बारदोली सत्याग्रह पर देते वल्लभभाई पटेल आम भारत प्रथम गृहमंत्री और प्रथम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडियन बिस्मार्क और भारत आयरन मैन कहुए and the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel 31st October. The birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel 31st October is celebrated as Indian Day of Unity. Indian Day of National Unity Day. Sorry, National Unity Day. The birth year of Sri Vallabhbhai Patel is known as National Day of Unity. 31st October, and in previous days it was celebrated as the death anniversary of Srimati Indira Gandhi, our former Prime Minister. तापर अछंती B.G. Tilak, Bal Gangadhar Tilak, an important figure in our Indian history. Bal Gangadhar Tilak is also known as Lokamanya. It is an important question. Who is known as Lokamanya in Indian history? Lokamanya, Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak was also written two important books. It are both important in the point of exam. Bal Gangadhar Tilak दुटा important boy लिखितले. First one, Arctic Home of Vedas. Arctic Home of Vedas. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି Arctic Home of Vedas ପରେ ଗୀତା ରହସ୍ୟ. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା दुईटा important books were written by Bal Gangadhar Tilak, Arctic Home of Vedas and Gita Rahasya. Bal Gangadhar Tilak is also known as Lokamanya. It was Bal Gangadhar Tilak who popularized Ganesh Pujan in Maharashtra, and it was Bal Gangadhar Tilak who started women empowerment and he played a many vital role in reconstruction of Maharashtra. Number 12, who blamed the British policy for India economic skills in his book Economic History of India. First, who retained the book Economic History of India? Point 1. Second, who blamed you? And the book deals with the ideas of a person who blamed the British policy for Indian economic ills. So, first point, Economic History of India, the book was written by R.C. Dutt. R.C. Dutt. यहाँ पर जो ऑप्शन रे भी थिला R.C. Dutt को ना थिला मु कहति ताको ऊपर पर क्वेश्चन रे डिस्कस हो R.C. Dutt, who established his views that how Indian economy is suffering by the intervention of Britishers. This thing is discussed in an elaborated way in this book Economic History of India, which is written by R.C. Dutt, Ramesh Chandra Dutt. And as we see, Amartya Sen, an Indian Nobel laureate, he got Nobel Award in 1998. Amartya Sen got Nobel Award in 1998 for welfare economics. Amartya Sen 1998 रे Nobel Award पाइथिले welfare economics लगी. तापर 1999 रे भारत रत्न पाइथिले. भारत रत्न 1999 और 1998 रे Nobel Award for welfare economics. Dadabhai Naoroji, that we have already discussed. Abdul Ghaffar Khan. Last but not least, Abdul Ghaffar Khan. तांकर बहुत बड़ योगदान रही इंडियन हिस्ट्री रे जदि कहबा बोले अब्दुल गफ्फर खान इज नोन एज फ्रंटियर गांधी. Abdul Ghaffar Khan is known as Bachcha Khan, Badshah Khan, and in other name also. तांकर अनेक गुड़े ना अछि सब तीनटा महत्वपूर्ण उपाधि होछि बच्चा खान, बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी.
and he was a Pashtun leader. He was a Pashtun leader. Abdul Ghaffar Khan is the first non-citizen to get Bharat Ratna.